Now let's discuss the chemical properties of metal and non-metal. Chemical properties. Chemical properties of. So number one chemical property is reaction of metal with air. That is oxygen. When any of the metal atom react with oxygen, it form metal oxide. When any of the metal atom react with oxygen, it will always form metal oxide. For example, you see copper react with oxygen, it will form copper oxide. Now few of the students must be confused at how to form copper oxide. So let me show you. You have studied this in class 9 that the charge of copper is 2 plus, the charge of oxide is 2 minus. Both the charges cut down, so it will become copper oxide. Similarly, if you take an example of aluminium plus oxygen, it will form aluminium oxide, Al2O3. Again, I am showing you that aluminium have plus 3 as a valency or a charge. Oxides have 2 minus, crisscross the valencies. So it will form Al2O3. Oxygen ki valency goes to aluminium, aluminium valency goes to oxygen. This is how you will form the product, Al2O3. Another example, Na plus O2, it will form Na2O. I have discussed you in the physical properties that sodium and potassium are highly reactive in nature. So the question arises, why sodium and potassium are stored under kerosene? Why sodium and potassium are stored under kerosene? So the answer is that they are highly reactive in nature. They are highly reactive in nature due to which are stored under kerosene so that they doesn't catch fire. मैंने अभी क्या बोला, मम्मा का टेस्ट चल रहा है. They doesn't catch fire. Doesn't catch fire. Or you can also say that to prevent further oxidation. To prevent further oxidation of metal atom. सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस कि सोडियम और पोटाशियम को हम केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं. आपको सिर्फ इतना बताना है कि सोडियम और पोटाशियम हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो मतलब उनमें आग लग जाती है. इसीलिए हम ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन में उनको स्टोर कर देते हैं. ओके, एंड देयर इज़ वन मोर मेटल एटम विच आई हैव शोन यू दैट इट इज़ कॉपर. तो इट डज़ नॉट बर्न. कॉपर बर्न नहीं होता है, बट इट फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. It form copper oxide which is black in color. Copper doesn't get burned in air because it is moderately reactive, or it is least reactive metal atom. That's why it doesn't catch fire. But if you talk about silver, gold, that metal does not react with oxygen. First of all, I have to tell you something, that before going to the chemical properties of the metal atom, what you have to learn is the reactivity series. You have to know about the reactivity. Reactivity series is, it is a list of metal atom. It is a list of metals which are arranged in order of their decreasing reactivity.
रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आपने पहले पढ़ी हुई है. इसमें हम मेटल्स को अरेंज करते हैं उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर के अंदर. जो हाईली रिएक्टिव मेटल एटम है वो टॉप पे आ जाएंगे, द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो नीचे आ जाएंगे. हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव एटम होते हैं. कौन कौन से होते हैं? आई विल टेल यू. नंबर 1 इज पोटाशियम, और आई विल राइट इन द सिंबल फॉर्म. पोटाशियम, then sodium, then calcium, then magnesium, then aluminium, then zinc, iron, lead, and then comes hydrogen. After hydrogen, it is copper, mercury, silver, gold, and platinum. So the elements or the metals which come above hydrogen, they are highly reactive, whereas below hydrogen they are least reactive. Now I have seen that few of the students face problem in learning this reactivity series. For them I will share a trick with you that केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, फीका पकाता है. और आगे आप ये भी कह सकते हैं है हाई कोर्ट है आपका. केदारनाथ का आलू ज़रा फीका पकाता है. दिस इज़ वेरी सिंपल ट्रिक. सी, केदारनाथ, के दैट इज़ पोटेशियम, Na, that is sodium, that is again ka means calcium. See the first letter, Mali, M, magnesium, Al, aluminium, Z, zinc, Fika, Fe, that is iron, P, pakata hai, that is lead, and hai is hydrogen. So it is very easy to remember. I'm again telling you, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है. If you learn this, you can learn the reactivity series. It's very simple. So on behalf of this series, I was telling you that when you react, the metal atom react with air. So the metal atom which is highly reactive in nature, they catch fire easily. So they are stored under kerosene. But if you talked about copper, because it is less reactive in nature, so it does not catch fire. It just form a layer of oxide and become black in color. Whereas the silver as well as gold and platinum, they are least reactive, so they does not react with oxygen. With ऑक्सीजन. अगर आप लोग देखो, आप चांदी की पायल पहनते हो, सोना पहनते हो, क्या सोना और चांदी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्साइड की लेयर बनाता है क्या? कभी सोना चांदी खराब होता है? नहीं होता ना. तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो लीस्ट रिएक्टिव इन नेचर्स होते हैं उनमें कभी ऑक्साइड की लेयर नहीं बनती है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नाउ देयर इज वन मोर टाइप ऑफ ऑक्साइड्स विच आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Amphoteric oxide. Please understand this topic very carefully because this is very important. It is a 3 marks question which asked in the paper. So what are amphoteric oxides? These are the metal oxide. Again, I am not talking about only metal, I am talking about metal oxides. So the metal oxides which react with acids as well as base are known as amphoteric oxides. मेटल एसिड या बेस से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स जो बनाते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं बोलते. वो मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट करे और बेस से भी रिएक्ट करे और क्या बना दे, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. To form salt and water are known as amphoteric oxide. The metal oxide which react with acid and base to form salt and water is known as amphoteric oxide. Let me tell you a very good example. एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. मैं इसकी 2 रिएक्शंस आपको दिखाने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा.
एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर मैं एसिड से रिएक्ट करती हूँ, दैट इज़ HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, it will form aluminium chloride AlCl3 and the water will release. आपको पता है salt and water ही बनेगा, एक salt बना दिया एक water बना दिया, very simple. As well as you can also understand like aluminium is positively charged, oxide is negatively charged, hydrogen is positively charged, chlorine is negatively charged. तो product क्या बनेगा? अंडरस्टूड सी चीज़ है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ ही जाके बॉन्ड बनाएगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा. And this aluminium oxide when react with sodium hydroxide which is a base, पहले मैंने एसिड से रिएक्शन की तो सॉल्ट एंड वाटर बना. सिमिलरली सेम ऑक्साइड की रिएक्शन अब मैं बेस से करा के देखती हूँ तो क्या बनेगा? इट विल फॉर्म NaAlO2, दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, sodium aluminate plus water. And this is also very important, sodium aluminate plus water. You can also do the same reaction which is given in NCERT. You can take an example of zinc oxide. अगर हम zinc oxide का example लेते हैं and if you react it with HCl, that is an acid, it will form zinc chloride and water. Similarly, if you react with NaOH, it will form, I think, sodium zincate बनता है, that is Na2ZnO2, that is sodium zincate plus water. So see, if you take an example of aluminium oxide or zinc oxide, both the metal oxide react with acid as well as base to form salt and water, to form salt and water. So please memorize it. Both the examples are important. This topic is very, very important for the examination point of view. So I hope you people have understand this reaction of metal with air. I have discussed you thoroughly. Now let's move on to the another reaction.